welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna do this look right here, and if you are new on my channel then it's my pleasure to let you know that I'm Dipali Verma and I make makeup videos and fashion videos. So let's talk a little bit about this look. And if you notice, then I have done these darker eyes with darker lips. So इस वीडियो में you will get to know how to achieve this look, how to achieve these kind of eyes, these kind of eyebrows. You will get to know everything about makeup what I have done today. So इस look के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी falsies या false eyelashes apply नहीं किए हैं, और if you want to apply them then you can. Let's start this video first and then you will get to know how to create this look on yourself. And before I start this video, let me tell you that if you like this video then please like my video and subscribe my channel. If you will subscribe my channel and press that bell icon, you can get my next video easily on time. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लैक मैट आई शेडो फॉर माई आईब्राउज एंड दिस पैलेट इज़ बाय मेबेलिन। और अपने आईब्राउज को फिल करने के लिए मैंने यूज़ किया है एंगुलर ब्रश और इसको स्लाइटली अच्छे से ब्लेंड करना है। आईब्रोज को अच्छे से फिल करने के बाद मैं मेरी आईब्रोज के जो एजेस हैं उसको क्लीन करूँगी कंसीलर के साथ, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का एज रिवाइन कंसीलर। दिस इज़ इन द शेड मीडियम। इसके बाद मैं ओवर आइज़ पर सेम कंसीलर अप्लाई करूँगी सो डैट मुझे आई शेडो का बेस मिल जाए। और फिर कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इसको पाउडर से सेट करूँगी सो डैट मैं कोई भी आई शेडो का कलर इस पर अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ। एंड देन आई टुक burgundy कलर फ्रॉम माई मैट आई शेडो पैलेट और इसको मैं अच्छे से क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग के लिए मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है बाय मेकअप स्टूडियो और इसको अच्छे से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना है सो डैट कहीं पर भी पैचेस या लाइंस आपको नज़र ना आए। और इसके बाद आइज़ को डेप्थ देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक मैट कलर और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पर।
इसके बाद मैं हाफ कट क्रीज लुक देने के लिए कंसीलर से अपनी क्रीज लाइन को थोड़ा सा कट कर रही हूँ एंड देन इसके बाद मैं कोई डिफरेंट कलर्स पर अप्लाई करूँगी। तो इस पर अप्लाई करने के लिए मैंने चूज़ किया डार्क बरगेंडी। जो मैंने क्रीज लाइन पर अप्लाई किया था इससे 2 टोन डार्क है, तो मैं डार्क ही अप्लाई कर रही हूँ। इस लुक के लिए मैं कोई भी ग्लिटर या कोई भी पिगमेंट यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मुझे इसको मैट लुक देना है, सो डेट्स वाई मैं कोई भी शाइनर इफेक्ट इसमें नहीं दूंगी। दोनों आइज़ को इक्वली चेक करना है कि वो ब्लेंडेड है या नहीं है। उसके बाद आइज़ कंप्लीट करने के बाद मैं अंडर आइज़ को अच्छे से क्लीन कर लूँगी टिश्यू पर कोई भी क्लींजर लेके, और इफ़ यू वांट देन यू कैन आल्सो यूज़ वेट वाइप्स। और किसी भी बेस को अप्लाई करने के लिए आई ऑलवेज यूज इसेंशियल ऑयल, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन इज बाय इंडल्जियो एंड दिस इज रियली गुड फॉर गेटिंग अ फ्लॉलेस बेस। एंड देन मैं इसको अपने फिंगर्स के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लोरियल का पेन आईलाइनर, स्केच आईलाइनर। And for hiding my each and every darkness on my face, I'm going to use this Pro Concealer in orange shade.
और मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया कि मैंने ये बेस अप्लाई कैसे किया है, मैंने जैसे उसको ब्लेंड कर दिया है। और अगर आप सीखना चाहते कि मैंने कैसे किया तो यू कैन ऑल्सो वॉच माई अनदर वीडियोज़, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि आपको कैसे बेस बनाना है, कैसे कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग कैसे करनी है। सो गो एंड वॉच दैट। So after blending, my face looks like this, and now I'm gonna apply blusher. So for that I'm using this Makeup Revolutions palette, and I'm gonna use these two blushers. And then for highlighting I'm gonna use this highlighter by the same palette, and then I'm gonna apply it on each and every highlighting points on my face. For highlighting my eyes, I'm gonna take this highlighter by the Maybelline palette. And for my lower lash line, I'm applying the same burgundy color what I have applied on my over eyes. And for making my eyes look more bigger, I'm gonna use this white gold pencil. Okay, so this one is my favorite. तो ये मस्कारा है लैक्मे आइकॉनिक का, यू शुड ऑल्सो ट्राई इट। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको फोल्स लैशेस की नीड नहीं होती है, सो दैट्स वाई मैंने कोई भी फोल्स लैशेस अप्लाई नहीं किया जैसे कि मैंने पहले बताया है। और गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस, एक्सक्यूज़ माय बैड वॉइस बिकॉज ऑफ कोल्ड। मेरी वॉइस थोड़ी नहीं ज़्यादा बिगड़ चुकी है, सो दैट्स वाई एक्सक्यूज़ दैट। एंड फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग दिस लिप कलर बाय कलर एसेंस। इसका कलर नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये बहुत ही प्यारा शेड है। And for fixing my makeup, I am using this spray by L'Oreal, and this one is perfect for makeup fixing. So guys, this is my final look. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, अगर आप ऐसे ही मेकअप वीडियोस देखना चाहते हैं तो। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए। माई इंस्टा ID इज़ दीपाली वर्मा मेकअप आर्टिस्ट।
So I hope guys you loved this look a lot, and if you loved that, don't forget to subscribe my channel. Subscribe it right now, and I will see you guys next time in my next video. Till then, take care. Bye bye.